Hello students, today's our topic is secondary growth. Till now we have discussed in previous lecture about the introduction of secondary growth in stem, basically in Dicot stem. Next we have discussed about the cambial ring. The cambial ring is present due to the intrafascicular cambium. It is basically a combination of inter and interfascicular cambium. Next we have discussed about spring wood and autumn wood. In spring wood and autumn wood we haven't discussed the annual ring, what is annual ring, and in this we haven't discussed the how we can determine the age of the wood by just identifying the ring. So that we haven't discussed. In this video we will discuss that topic, and next we will discuss about the heartwood and sapwood, and lastly we will discuss the secondary growth in stem. So welcome to our channel Concise Concept. So let's start. Till now we have seen the difference between the spring wood and autumn wood. Spring wood and autumn wood, what is, just I will just have a recap here. What is spring wood and autumn wood? When there is during temperature, when cambium, that is vascular cambium, more and more xylary elements are formed during the spring season, then it is more active. This xylary elements, that is, if this is a vascular cambium, then more and more xylary elements would form. What is this xylary elements? Means vessel like organ, some vessels like organ like this. This is xylary elements. Okay. So xylary elements are formed in cambial ring, in cambium basically. So xylary elements would form. Xylary elements would form here. See here. So more and more xylary elements would form. More and more. But during the autumn season, it will form less. Less xylary elements would form. Less. And after that again more and more xylary elements would form. Then again less xylary elements would form. It means this is spring wood and this is autumn wood. And again this is a spring wood and again autumn, then again spring. So like this structure are there. So as we know, in here we will discuss about the annual ring. What is annual ring? Annual ring. Annual ring क्या होता है? Annual means in a 1 year. तो क्योंकि एक साल में स्प्रिंग सीजन भी आता है और ऑटम सीजन भी आता है, तो इसीलिए कंबाइनली बोथ द रिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, that is spring wood and autumn wood, combinedly called as annual ring. So this is spring wood and autumn wood combinedly called as this annual ring. So by counting the number of annual ring, we'll just determine how much the age of the wood is. So if there is 10 annual ring, it means the age of the plant is 10 years. If there is 10 annual rings, means there would be 10 spring wood and 10 autumn wood. If 10 annual ring, I am telling 10 annual ring, then it means 10 spring would be there and 10 autumn would be there. Basically the study of age of the wood is dendrochronology. Dendrochronology means the study of age of the wood. It's called dendrochronology. So the study of age of the wood, here I am studying about the age of the wood, how we can determine the age of wood. This I can show by the help of one wood also. So just wait and just see. See here, if this is a wood, see here, this you can see, this is darker one and this is lighter one. Then again it is darker one, and then again it is lighter one. Then again it is dark, then light, then light, dark, then light, then dark. So these are the ring-like structure forming in the wood. This is a wood that I have. I will just explain you in this. This is a ring-like structure. Okay, and by counting these rings only, we can just determine the age of this wood. So this is a ring-like structure that I am explaining you here. Now we will discuss about the secondary growth in cork cambium. कॉर्क कैम्बियम में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है? कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे है? दैट इज इन द कॉर्टेक्स रीजन ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है. कॉर्टेक्स में किस रीजन में? तो हाइपोटर्मिस में, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. तो हाइपोटर्मिस का दैट इज कॉर्टेक्स रीजन में डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी ग्रोथ का. तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर उसमें होगा तो कॉर्क कैम्बियम फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, और उसको फेलोजेन हम लोग भी बोलते हैं. टेक्निकली दिस इज कॉल्ड फेलोजेन ओनली. तो कॉर्क कैम्बियम अगर इनसाइड में ग्रोथ होगा, ये इनसाइड है, अगर इनसाइड ग्रोथ होगा
और एक आउटसाइड भी ग्रोथ होता है। तो अगर इनसाइड ग्रोथ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इनसाइड ग्रोथ हो रहा है, इनसाइड ग्रोथ हो रहा है, दिस इज दिस, तो इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही हम लोग फेलोडर्म भी बोलते हैं, फेलोडर्म। फेलोडर्म। नाउ अगर ये इनसाइड की जगह अब ये आउटसाइड में जो ग्रोथ होता है, दैट इज द सेल फॉर्मिंग आउटसाइड द कॉर्क कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड। आउटसाइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क, ओनली कॉर्क, और टेक्निकली इट इज कॉल्ड फेलन, फेलन, फेलोजन, फेलन एंड फेलोडर्म. Now you can see this part and again this part. This phelogen, pheloderm and phloem is togetherly known as periderm. It means phelogen, I will just write it here, phelogen, pheloderm plus phloem, togetherly known as periderm. तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे m, यहाँ फेलेम है तो m जेम डेम, लास्ट वर्ड विल रिमेंबर, तो m जेम या फिर जेम डेम m, कुछ भी याद रखिए, जेम डेम m, तो जेम डेम m को हम पेरीडर्म बोलते हैं. तो जो ओनली जस्ट रिमेंबर लास्ट वर्ड जेम डेम m. So just you will remember the cortex that is cork cambium में कैसे होता है secondary growth. Now we'll discuss about the two wood that we have told, heartwood and sapwood. The difference between we'll see. Now we'll discuss about the difference between heartwood and sapwood. Two woods are there in plant, heartwood and sapwood. What are these wood? So if woods are formed, if this is a trunk of a wood, I will just take a trunk of wood, think is a trunk, okay, and I'm taking a part of it, so just think of it. The wood that forms in middle of the, that is this part, the middle portion, this is called heartwood. You can remember the heart is present in the middle of our body also, so heart means middle. So middle portion of the wood is also called heartwood. And sapwood, the sapwood means the outermost portion. After this, the outermost portion, this is called sapwood. Then why it is called heartwood and sapwood? You can just see the difference between. You can take a screenshot also. So I will just explain one by one. Formed by old xylem, because in between, that is in the middle only, xylem are present. ज़्यादातर जो xylem होता है वो बीच में प्रेजेंट रहता है, तो ओल्ड xylem से बना हुआ होता है हार्टवुड. तो ओल्ड xylem से, बट ये जो होता है ये यंगर xylem से बना होता है. दैट इज, अब बोलेंगे कि सर दोनों तो xylem से बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स द वुड इज ओनली xylem का ही होता है वुड. ठीक है, ये वुड जो देख रहे हैं, ये वुड जो देख रहे हैं ये xylem है और कुछ नहीं, ये xylem है. ठीक है, इसको वुड नहीं, इसको साइंटिफिकली हम लोग xylem बोल सकते हैं, बट और सेकंड कौन सा xylem? तो सेकेंडरी xylem. तो ये xylem का बनाना, तो फॉर्म्ड बाय यंगर xylem. तो दीज portion, that is sapwood, is formed by younger xylem. It do not participate in minerals and waters. ये participate नहीं करता. अब क्यों नहीं participate करता है? क्योंकि यहाँ पे deposition होता है resins, gums and tannins का. तो these are some organic materials which are secreted in the plant only. क्यों? क्योंकि ये अलाउ नहीं करता, ये रेजिन्स टाइनिन्स अलाउ नहीं करता है फूड और वाटर को. दैट इज मिनरल्स इन दी टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स. फूड नहीं, क्योंकि फूड तो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है. इन जाइलम वाटर एंड मिनरल्स आर ओनली ट्रांसपोर्टेड, सिर्फ वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है. तो जो टाइनिन्स, क्योंकि द डिपोजिशन, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ रेजिन्स, टाइनिन्स एंड गम्स, सो देयर डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. बट देयर इज नो डिपोजिशन इन द sapwood, so it allows the water and minerals. Last is because there is a deposition of resins and tannins, so insect or some microbes cannot attack it, so insect are not getting infected by it. But here it can be infected by the sapwood, can be infected by the insect. Now more points are there, that is, it is durable wood, it is commercially used also. It is not durable, it is not commercially used. So now we'll discuss about the secondary growth in root. रूट में कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ. रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ सेम एज अ स्टेम के जैसा ही होता है, बट उसमें कुछ डिफरेंस है.
कुछ एक दो पॉइंट का डिफरेंस है, दैट आई विल डिस्कस। बट जैसा जिस तरीका से अरेंजमेंट है, दैट इज डिवीजन, जैसा डिवीजन होता है स्टेम में वैसा ही डिवीजन होता है प्लांट में, दैट इज रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ का जो रूट होता है उसमें भी वैसा ही डिवीजन होता है, बट कुछ पॉइंट में डिफरेंस है। तो दैट डिफरेंस पॉइंट ओनली विल डिस्कस, विल नॉट डिस्कस होल पार्ट, विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट बिकॉज वी हैव डिस्कस द स्टेम पार्ट। तो स्टेम में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब रूट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, रूट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो हम डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि वो सेम होता है तो विल नॉट डिस्कस ऑल पार्ट, विल डिस्कस द डिफरेंस पार्ट कि डिफरेंस क्या है उसमें, क्या एक दो पॉइंट का डिफरेंस है, दैट विल सी हियर। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट कि रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। तो रूट में सेकेंडरी ग्रोथ वैसे ही होता है जैसे कि स्टेम में होता है, बट सम डिफरेंस आर देयर, दैट विल डिस्कस। वैस्कुलर कैम्बियम इज वेवी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर दैट इज इनवर्ड्स जाइलम प्रेजेंट है और बाहर फ्लोएम प्रेजेंट है, बट ये जो रूट में प्रेजेंट है वो वेवी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरीका से वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। बट आफ्टर दैट व्हेन देयर इज अ ग्रोथ, दैट वेवी लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर दैट बिकम्स सर्कुलर, और सर्कुलर होने के बाद द ग्रोथ टेक प्लेस एज इट गोज इन स्टेम, जैसे कि स्टेम में होता है वैसे ही होने लगता है, बट स्टार्टिंग में वो वेवी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी ओरिजिन कराता है, बट इन स्टेम इट इज प्राइमरी इन ओरिजिन। वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन कराता है स्टेम में। नेक्स्ट इज कंप्लीट कोर कैम्बियम, वो पेरीसाइकिल से बनता है। एंड लास्ट इज lenticels are not forms. This I haven't discussed in stem, now we'll discuss. Just see here, it's very small topic. होता क्या है लास्ट में जब कोर कैम्बियम दैट इज स्टेम में, नाउ दिस टॉपिक इज ओवर, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस लेंटिसल की लेंटिसल टिल नाउ वी हैवंट डिस्कस दिस लेंटिसल। अब ये है क्या, होता क्या है, ये बार्क में दैट इज आउटर पोर्शन में जो था ये था दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम एंड दिस इज कोर कैम्बियम, जस्ट इमेजिन। एंड कोर कैम्बियम में जब हो रहा था दैट इज डिवीजन हो रहा था, तो कॉर्क कैम्बियम में फेलोजन, फेलोडम, फेलन ये सब बना। तो बाहर का जो सेल है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो बाहर का सेल रप्चर कर गया, दैट इज बर्स्ट कर गया। बर्स्ट करने की वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज लेंस लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लेंटिसल। तो these cells and these portion is only called lenticel, and these lenticel, from this lenticel only, this is the stem I am explaining about this stem. So from this lenticel only क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ गैसेज टेक प्लेस, एयर मॉलिक्यूल्स कैन एंटर थ्रू इट, ट्रांसफर ऑफ गैसेज, इट अब्जॉर्ब सम गैसेज ऑल्सो, तो गैसेज अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दिस लेंटिसल, इट टेक प्लेस इन स्टेम, ये स्टेम में होता है। और ये कब होता है, व्हेन डिवीजन ऑफ कोर कैम्बियम दैट इज फेलोजम, फेलोजन, फेलोडर्म ये सब बनता है, तब उस वक्त सेल रप्चर कर जाता है। रप्चर करने की वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर, द पैरेन्काइमा फॉर्म्स लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज लेंस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लेंटिसल बोलते हैं। और ये क्यों बनता है, टू ट्रांसफर ऑफ, सो दैट ट्रांसफर ऑफ what, ट्रांसफर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स दैट इज गैसेस टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब यहाँ पे भी एक बात है, जब ये इसी को तो बोलते हैं बार्क, तो बार्क में अर्ली बार्क बनता है, और यहाँ पे अर्ली सीजन में जो बार्क बनता है उसको अर्ली बार्क बोलते हैं या फिर सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, अर्ली सीजन। बट जो लेट बनता है, ठीक है, इन बेसिकली लेट सीजन, व्हेन दिस बार्क फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द लेट सीजन, देन इट इज हार्ड बार्क। सो टू टाइप्स ऑफ बार्क इज ऑल्सो देयर, अर्ली बार्क एंड हार्ड बार्क, सो दैट वी कैन सी हियर। बट मेन टॉपिक इज लेंटिसल, लेंटिसल किसको बोलते हैं, ठीक है, तो लेंटिसल किसको बोलते हैं, वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट. So if you like the video, please subscribe this channel and hit the bell icon to get all the notification